हेलो बच्चों, कैसे हो? ये मेरी पहली क्लास है और एज पर योर रिक्वेस्ट आई एम टेकिंग द क्लास ऑन जर्नल एंड लेजर। तो जितना भी पॉसिबल होगा हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना माइक जो है ना म्यूट रखें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऑन करके अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। मैं स्वागत करता हूं आपका विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस के अंदर। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर। और साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर। आपको इन दोनों लिंक पर जो है बहुत सारा स्टडी मटेरियल, साथ में जो है कुछ पीडीएफ फाइल्स, सैम्पल पेपर्स एज पर द लेटेस्ट पैटर्न और प्रैक्टिस पेपर्स आपको जो है अवेलेबल होंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ना केवल आपको यहाँ पर अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बल्कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है जर्नल एंड कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा है टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से हमने जो है डाटा टाइप किया है, लिया है। तो इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो क्या रहेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि हम इसमें मीनिंग सीख पाएंगे जर्नल का और जर्नलाइजिंग का। हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ पाएंगे, एडवांटेजेस जान पाएंगे जर्नल की, लिमिटेशंस क्या होती हैं, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, डिस्काउंट एंड रिबेट में क्या अंतर है, ओपनिंग एंट्रीज क्या है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है that can be measured in the terms of money and are recorded in the books of the account on the basis of evidence such as bills of purchase, invoices for sales, debit and credit notes, which are known as source documents। तो किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम जो है ना मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं और केवल उन्हीं को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इनका एविडेंस हमें बेसिकली किन से मिलता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलता है, जैसे कि हमने चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट में डिस्कस भी किया था और आप लोगों ने पढ़ा भी है, जिसमें हम इनवॉइसेज, बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, इनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। सो दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो है जर्नल, दूसरा है लेजर। जर्नल के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं और यहाँ से हम इनको लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इज नोन एज जर्नलाइजिंग एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो आज हम जो है जर्नल के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है एक छोटा सा क्वेश्चन भी लगाएंगे उसके ऊपर जर्नल का, कैसे हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, कैसे इसके फॉर्मेट को मेंटेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। सो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिमेंबर दैट ये जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, जर्नल बुक जो हम मेंटेन करते हैं, वो डे वाइज, डेट वाइज मेंटेन करते हैं। डेट एंड डे वाइज, दैट इज नोन एज डेट एंड डे वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट एंड डे वाइज। जर्नल इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, सिंस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर्ड, पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स। तो जितनी भी हमारी जो पार्टिकुलरली जर्नल होती हैं और ट्रांजेक्शंस में जो जो ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। वहां से हम उनको कहाँ पोस्ट कर देते हैं, लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। And rules of debit and credit are applied to each transaction at the time of recording in the books of accounts। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है, जैसे कि हमने पढ़े थे पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के बारे में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल, रिवेन्यू, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स के जो रूल्स हमने पढ़े थे डेबिट क्रेडिट के, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इनका भी हम बीच में एक क्विक रिवीजन लेंगे। लेजर, लेजर क्या होता है? लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। लेजर कैसी बुक है? प्रिंसिपल बुक है, बुक ऑफ अकाउंट्स।
as all the accounting information can be obtained from this book. बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दोनों बुक्स हमें बहुत जरूरी होती है, इन्हीं के आधार पर हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स। In detail, we are going to discuss journal. What is meaning of the journal? The journal is a book of primary entry or book of original entry in which transactions are first recorded in chronological order and that is in order to sequence they are entered. It means कि अगर मान लीजिए 1 दिसंबर को हमने कोई ट्रांजेक्शन की तो वो 1 दिसंबर को रिकॉर्ड हो जाएगी, 2 दिसंबर को हमने कोई ट्रांजेक्शन की तो 2 दिसंबर को रिकॉर्ड हो जाएगी, 3 दिसंबर को अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की तो 3 को, 4 को तो 4 और 5 को तो 5। इसमें सीक्वेंस में रिकॉर्ड होंगी, यानी जो ट्रांजेक्शन पहले हुई वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में हुई वो बाद में रिकॉर्ड होगी। Transactions are recorded in journal book from the accounting vouchers and that are prepared on the basis of source documents, that is cash memo, invoices, purchase bills, etc. All financial transactions can be recorded in a simple journal. जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उन सबको हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंपल जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। An enterprise may decide to maintain separate journals to record particular type of transactions. That is, credit purchases may be recorded into purchase journal, credit sales may be recorded into sales journal, purchase return may be recorded into the purchase return journal, and so on. These separate journals are called special journals or special purpose book or subsidiaries books. Generally हम subsidiaries book के नाम से जानते हैं। टर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज फॉर जर्नल। जर्नल में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वो क्या क्या है मेन टर्म्स। फर्स्ट वन है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, इसलिए इसको प्राइम बुक भी कहा जाता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। बिकॉज a transaction is first recorded or written in the book, that is, and thereafter transferred it into ledger account. सेकंड, जर्नल एंट्री क्या होती है। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। व्हाट इज पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री to the ledger account is called posting, or the process of posting or transferring the entries from journal to ledger is called posting. Characteristics क्या है, फीचर्स क्या है जर्नल के। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में यदि हम बात करते हैं जर्नल के, तो डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए जर्नल इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। जिस ऑर्डर में, जिस डेट में वो हुई हैं, उसी डेट में, उसी सीक्वेंस में उनको क्या करके चलते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड इन लेजर अकाउंट्स। और ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, इसमें हम ट्रांजेक्शन जो है, जिसमें से हम ट्रांजेक्शन कहाँ पर पोस्ट करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग। नेक्स्ट है हमारा इसमें, जर्नल इज ए रिकॉर्ड विच शोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन वन पर्टिकुलर entry. And journalizing is a process of recording the transaction in journal and the form in which it is recorded, it is known as journal entry. So these are the few characteristics or features of the journal. Now what are the advantages to prepare the journal? जर्नल को बनाने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर हम जर्नल को बनाने के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकंड है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, ये एरर्स को कम करने में मदद करता है। थर्ड वन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस होती हैं पार्टिकुलरली उनकी एक्सप्लेनेशन देता है कि ट्रांजेक्शन क्या हुई है। लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और उनको फिर जो है लेजर में पोस्ट करने में हमारी ये मदद करता है। देयर आफ्टर लोकेशन ऑफ एरर, और एरर्स जो होती हैं उनके पार्टिकुलरली लोकेशंस को, कि वो एरर कहाँ हुई है, उनको फाइंड आउट करने में मदद करता है। आइए देखते हैं वन बाय वन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ट्रांजेक्शन इन जर्नल आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस and thus it makes available the accounting record in chronological order as well as date wise order. What is possibility of error reduces? Possibility of error is reduced as the amounts to be debited and credited are written
side by side, and the two can be compared to verify whether they are equal or not. If the accounts are written up directly in the ledger account, there is a possibility of wrong amount being written, or amount written on the debit side may be more or less than on the credit side. तो इस चीज को भी ये क्या करता है, हमें आइडेंटिफाइड करने में मदद करता है, एरर्स को कम करने में मदद करता है, सही ट्रांजेक्शन को सही तरीके से पोस्ट करके। Along with the entry in journal, narration is written and which give the explanation about the transaction. Next, ledger posting of transaction. Journal is the base for posting of transaction into ledger accounts. So debit and credit aspect of transactions are distinctly marked as debit as well as credit, and making posting into ledger accounts becomes easy. And what do you mean by location of error? So location of error is facilitated in case of a disagreement of a trial balance. On the behalf of the journal, we prepare the ledger, and on the behalf of the ledger, the balances which we have extracted as debit and credit balances that are to be transferred into trial balance. And if the trial balance does not agree, it means we have made some kind of error. Either we have omitted any particular entry to post into the ledger, or we have made any other kind of error. What are the limitations of journal? जर्नल की लिमिटेशंस क्या हैं? अगर हम बात करते हैं जर्नल की लिमिटेशंस के बारे में, तो अनसुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, recording all transactions in a journal is feasible if the number of transactions are not many. In the case the number of transactions is large, it becomes bulky, inconvenient to maintain one journal to record all the transactions, because the journal book will become heavy or voluminous. उसमें जो है डाटा उसका बड़ा हो जाता है, लार्ज साइज में डाटा आ जाता है, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारे इसमें जो लिमिटेशन है, नोट ए सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। ये कोई सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड and applying the rules of debit and credit. The process requires analytical and technical skills, knowledge for correct accounting. So we can say that it is not a simple system of recording. नेक्स्ट है कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। जर्नल से हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है। रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन जर्नल मीन्स कैश बैलेंस कैन बी known after posting of cash transaction in cash account, which is a lengthy process. However, this limitation can be overcome by maintaining special journal for cash transaction, that is cash book. तो उसके लिए हम कैश बुक जो है ना बनाकर इस प्रकार के प्रॉब्लम को यहाँ रिमूव कर सकते हैं। नोट ए सब्सिट्यूट ऑफ लेजर, ये लेजर का सब्सिट्यूट नहीं है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन और head is known after posting the transaction into ledger account. So journal is thus not a substitute of a ledger. So these are the limitations of the journal. Now what would be the format of journal? Let us डिस्कस फॉर्मेट ऑफ जर्नल की। अगर हम बात करें तो जर्नल के फॉर्मेट को हमने 5 कॉलम्स में डिवाइड किया है। ये कॉलम है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एंड हाउ वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, इट इज एज फॉलो। We will use a scale to draw it: date, particular, ledger folio, debit amount and credit amount. Now what LF stand for here? LF standing for here ledger folio. Now date, in the date column we generally write the transaction date. Particulars में हम लिखते हैं dual aspect concept के according which account is going to be debited and which account is going to be credited. So in the particulars we will write the journal entry by using the two. Narration, it is a brief description of the transaction, is also written after the entry. And what is ledger folio? Ledger folio is a column, the number of ledger pages is written to which the debit and credit aspect of transaction is posted. For example, the proprietor invests further capital of rupees 5 lakh and capital account is maintained at ledger page number 53. So against the entry to capital account is the ledger column number 53 is written, which shows that credit aspect of a transaction is posted to the ledger page number 53, राइट। तो ये हमें हेल्प करता है जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करने में। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को बेसिकली हम डेबिट
अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट को डेबिट कॉलम में क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं जर्नल एंट्रीज के अंदर। नोट, छोटा सा यहाँ एक नोट है, इस नोट को हम अगर डिस्कस करें तो क्या लिखा है, देखते हैं। ऑल द कॉलम्स एक्सेप्ट द लेजर फोलियो कॉलम आर कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। द लेजर फोलियो कॉलम इज फिल्ड इन एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। ध्यान रखिएगा, जो लेजर का कॉलम होता है, लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है, उसको हम केवल कब फिल करते हैं, लेजर पोस्टिंग के वक्त, हमने किस पेज पर कौन सी ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया है। अगर हम बात करें स्टेप्स की इन डूइंग द जर्नलाइजिंग, तो हमारे पास क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है ascertain the accounts that are affected by a transaction। सेकंड स्टेप है ascertain the nature of account to be affected। थर्ड वन है ascertain the account to be debited and credited by applying the rules of debit and credit। Let us have a quick revision over the rules of debit and credit as per the both approaches, traditional as well as modern approach। Based on the traditional approach, the accounts are to be classified into three parts: personal, real, and nominal. And the rules are: in the personal account, receiver is the debit, giver is the credit. And in the real account, what comes in debit, what goes out credit. And in the nominal account, all the expenses and losses debit, all the incomes and gains credit. And if we are going to discuss about the modern classification of accounts, so there are 5 kinds of account that we have learned with the word clear, CLEAR, that is clear। हमने इसे इसके साथ किया था, C for capital, L for liability, E for expense, A for assets और R for revenue। So for the rule of assets, that will be increased by doing the debit and decreased by doing the credit, and about the liabilities, it will increased by doing the credit and decreased by doing the debit। And capital is the having same rule, decreases by doing the debit and increased by doing the credit। Revenue having the same rule, that is decreased by doing the debit, increased by doing the credit। And expenses having the rules like the assets, they are going to be increased by doing the debit and going to be decreased by doing the credit। So these are the rules of debit and credit। Now step number 4 for doing the generalizing, that is determining the amount by which the accounts are to be debited and credited। जैसे ही हमने ये पता किया कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कितनी अमाउंट से कोई अकाउंट डेबिट होगा, कितनी अमाउंट से कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। रिकॉर्ड द डेट एंड मंथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम एंड द ईयर एट द टॉप। एंड स्टेप नंबर 6 इज रिकॉर्ड द पार्टिकुलर्स कॉलम द अकाउंट टू बी डेबिटेड अलोंग विद द नेम ऑफ अकाउंट abbreviation debit and is written in the same line against the name of account। Write the amount to be debited in the debit amount column। And step number 7, record the particulars column, the account to be credited, name the account to be credited is written in the next line preceded by the word to। The word to is written towards the right after leaving a few space। Write the amount to be credited in the credit amount column। And step number 8 is record brief description of the transaction, that is to be known as narration। And step number 9, draw a line across the particulars column to separate one journal entry from the another journal entry। So ये सब हम जो है स्टेप्स फॉलो करेंगे जर्नलाइजिंग प्रोसेस के लिए। आइए डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। If a transaction relates to the sales or purchase of goods giving the name of the seller or purchaser and it is not stated that cash is transacted, so it is accounted as credited transaction। For example, goods sold to Mohan, here only the name is given and not mentioned that whether goods are to be sold in the cash basis or in the credit basis। So we will consider these are sold on the credit basis, means that goods are to be sold to Mohan on credit, accordingly Mohan's account will be debited and sales account will be credited। Second point, if transactions relates to sales or purchases giving the name of seller or purchaser stating that cash is transacted, it is accounted as cash transaction। So for example, goods sold to Mohan for cash means goods are sold in cash. Accordingly,
cash account will be debited and sales account will be credited as per the rules of debit and credit. If a transaction relates to sales or purchase and the name of the seller or purchaser is not given, it is accounted as cash transaction. For example, goods sold for rupees 10,000. Here it is not mentioned that to whom we are selling the goods. It means we are selling the goods on the cash basis. In expense accounts, even if the name of the party receiving or making payment is given, it is accounted as expense incurred in cash. Personal account of the person receiving the amount is not debited, and for example, if salary of rupees 5,000 is paid to Ranjan, the transaction will not be recorded in the account of Ranjan. Instead of, we will use the salary account and debited the salary account as well as credited the cash account, because cash has goes out as per the rules of debit and credit of nominal account and real account, because salary is a nominal account, it is an expense, and cash is a real account because it is an asset. Introduction of capital in the business by the proprietor is credited to his or her capital account, whereas withdrawal of cash or goods for his personal use is to be debited to drawings account. As we know that if the businessman or the owner withdraws the good for the personal use or withdraws the cash from the business for personal use, it will be termed as drawing. नोट करें आप ये छोटी सी बात सॉरी नोट देखें रिकॉर्डिंग इन जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस following the business entity concept, because business entity concept said that business and businessman both are the separate identity, so all the transactions are to be recorded into business in the viewpoint of the business only. So transactions are recorded on the basis of accounting vouchers prepared from the source documents, following the rules of debit and credit, applying the accounting concepts and principles. There are two types of journal entries. There can be simple journal entry and compound journal entry. If we will discuss about the simple journal entry, तो जर्नल एंट्री को हम दो प्रकार से कैसे बांट सकते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड में. तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है, चलिए देखते हैं. सिंपल जर्नल एंट्री इज द जर्नल एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर टू बी इंटरेक्टेड or affected. One account is debited, another account is credited with the equal amount. The journal entries discussed earlier in the chapter are examples of simple and journal entries. जो इस प्रकार की एंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे सैलरी पेड हमने पढ़ा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन हमने पढ़ा, तो दीज आर द सिंपल एंट्री जहां पर एक अकाउंट डेबिट हुआ और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ. और नाउ व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री. अगर हम कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बात करते हैं तो कंपाउंड जर्नल एंट्री इज a journal entry in which more than two accounts are affected, that is one or more accounts are debited and or one or more accounts are credited or vice versa. For example, a sale of rupees 5,000 is made to Satish. It is discharged by Satish by paying rupees 2,000 in cash, balance to be paid later. So this type of transactions we will going to be record like this one. किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे इसको. कैश अकाउंट डेबिट जो 2,000 रुपए हमें उसे नगद मिले, बाकी हमने उसको उधार में सामान बेचा. सीस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए और टू सेल्स हमारी हुई 5,000 रुपए. इसमें दो अकाउंट हमने क्या कर दिए, डेबिट कर दिया और एक अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. दैट इज टू बी नोन एज सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री. नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा इसमें है डिस्काउंट एंड रिबेट का. नाउ व्हाट इज डिस्काउंट. Discount is an allowance given by the seller of the goods out of the selling price, and also called list price or the marked price or catalog price of goods, called trade discount, or the deduction or allowance but out of amount payable, that is called cash discount. यानी जब हम गुड्स बेचते हैं और सिंपली डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज टू बी नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. लेकिन अगर हम पेबल अमाउंट में से कुछ डिस्काउंट अलाउड करते हैं दैट इज टू बी नोन एज कैश डिस्काउंट. सपोज करिए मैंने 80,000 रुपए का सामान 10% डिस्काउंट पे सेल किया, तो हम जो 8,000 रुपए की डिस्काउंट दे रहे हैं दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, और जो अमाउंट पेबल बची 72,000 वो अमाउंट यदि उसमें से भी हम उसको 2,000 का और डिस्काउंट दे रहे हैं तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट. रिबेट ऑन द अदर हैंड. रिबेट ऑन द अदर हैंड क्या होता है जरा देखते हैं. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सेलर फॉर रीजन अदर देन फॉर
which डिस्काउंट इज अलाउड। इट मीन्स कि हो सकता है प्रोडक्ट लो क्वालिटी का है, हो सकता है प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नजदीक आने वाली है, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट पे क्या कर दिया, रिबेट दे दिया। रिबेट एंड डिस्काउंट आर द डिफरेंट कंसेप्ट। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन द लार्ज quantity. It is normally allowed by seller to the purchaser who further sells goods to the consumer, and it is deducted in the invoice from the sales price and not recorded in the books of accounts. Sale is recorded at the net value. Sales price less trade discount. Thereafter, we will charge the GST on the balancing amount. Trade discount is allowed on the sales, therefore it is allowed on both cash sales as well as a credit sales. चाहे हमने नगद में सामान बेचा हो, चाहे हमने उधार में सामान बेचा हो, दोनों पर ही हम इसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। ना व्हाट इज रिबेट? रिबेट से अगर हम समझें तो रिबेट क्या होती है? Rebate is also a reduction in the value of goods sold allowed by the seller of the goods, but for reason other than for which trade discount is allowed. For example, rebate may be allowed for the poor quality of goods, goods being not as per the specification, etc. And it is different from the trade discount, as trade discount is allowed on higher volume of the goods purchased by purchaser, and rebate is allowed for region other than higher volume of the goods purchased. So this is the basic difference between the rebate and the trade discount. बेसिकली ये पोर क्वालिटी के लिए दिया जा सकता है रिबेट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कैश डिस्काउंट? सो कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू इंक्रीज prompt and early payment. It is allowed as percent of invoice value or payment made say 2% of the invoice value to the buyer. Cash discount is calculated after deducting trade discount from the invoice price. In other words, cash discount is calculated always on net amount. It is allowed at the time of receipt of amount in cash or by check, or you can say that for the prompt payment, that is for the prompt payment, we generally allow the cash discount. It is an expense for the business allowing it and gain for business availing it. ये अगर हम जो है ना अलाउड करते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और अगर हम इसको गेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक गेन माना जाता है, इनकम मानी जाती है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट by the party receiving the amount, and cash discount received is credited to the discount received account by the party making the payment. Discount received or discount allowed is related to the payment, and thus they are recorded in the books of accounts along with the entry recorded for the payment and receipt of the amount in cash or by check. When cash discount is allowed or received, GST is not levied since it is for early payment and not sale or purchase of the goods. What are the differences between trade discount and rebate and cash discount? So there are some differences that we have to be discussed. On the basis of nature अगर हम बात करें तो trade discount is allowed on the sale or purchase of certain high volume of quantity of goods, high volume or quantity of goods. Rebate क्या होती है? It is allowed because of the reasons other than those for which the trade discount is allowed, say because of poor quality. Cash discount generally to be provided for getting the prompt payment. Sorry. Nature of transaction. It is allowed on both cash and credit sales or purchases. It is allowed on both cash and credit sales. It is allowed only on payments. Recording की अगर बात करते हैं तो it is not to be recorded into books of accounts. It is recorded separately in the books of account because it is allowed after the sale is made, and cash discount is recorded separately in the books of accounts. Next है deduction from invoice. The amount of trade discount is deducted from the invoice
It is not deducted from the invoice, but it is deducted from the sale or purchase in the trading and profit and loss account, and it is not deducted from the invoice. कंसिडरेशन की अगर बात करें तो कंसिडरेशन फॉर अलाउंस इज परचेजेज एंड कंसिडरेशन फॉर अलाउंस इज अदर देन विच द ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इज अलाउड, एंड द कंसिडरेशन फॉर अलाउंस इज पेमेंट। रिलेशन की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, सो जीएसटी इज डिवाइडेड एट द नेट अमाउंट। इट इज रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स, so GST charged at the time of sales is reversed, and it is related to payment. What are the advantage of trade discount and advantage of cash discount? अगर हम बात करते हैं advantage of trade discount के बारे में, so it improves sales by increasing the purchaser to buy large quantities. It reduces the purchase cost of the purchaser and thus increases the profit margin. A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face the competition. Different prices can be charged to regular customers and occasional customers. It enables the retailer to sell at the least price and at a better profit. It is easy method for making changes in the prices without reprinting catalogs or changing the prices given in the articles. Like suppose करिए कोई particular हमने कोई आर्टिकल परचेज किया ए, उसका जो प्राइस प्रिंटेड था कैटलॉग प्राइस था वो था 400 रुपए। हम इस पे इनिशियली 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर रहे थे, तो हम 10 रुपए का डिस्काउंट देकर इसको कितने रुपए में बेच रहे थे, तो 40 रुपए का डिस्काउंट देकर हमको कितने रुपए में बेच रहे थे, 360 रुपए में बेच रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़े तो हम ये ट्रेड डिस्काउंट 10% से कम करके 8% कर सकते हैं, तो हमारा 2% से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बिना प्राइसेस को बदले हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा या घटा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के फायदे क्या क्या हैं? सेलर ऑफ गुड्स रियलाइजेज द सेल्स अमाउंट प्रॉम्प्टली। जो सेलर होता है गुड्स का, उसको जल्दी से जल्दी सेल्स का पैसा मिल जाता है अगर वो कैश डिस्काउंट अलाउड करता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू इंक्रीज ए डेटर टू पे विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज रिड्यूस्ड फॉर द सेलर, और इससे जो सेलर पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पैसा जल्दी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। It improves the cash inflows of the business, which can be better utilized, and early payment results in higher cash discount, thus increases in the income also। अगर हम भी पेमेंट करते हैं यानी बिजनेसमैन पेमेंट करता है तो उसको भी कैश डिस्काउंट मिलती है, जो कि उसकी इनकम को बढ़ाता है। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग enables selling of the goods at a lower prices। So entries for some specific transactions। तो ये सब तो हमने पढ़ा कि भाई जनरल क्या है। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं, एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट तक। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से पूरा देखिए और इसके नोट्स बनाइए ताकि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ सकें। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर।